हेलो एवरीवन वेलकम टू वेस ऑफ डेली करंट अफेयर डिस्कशन। तो आज करंट अफेयर डिस्कशन रे में डिस्कशन स्टार्ट करिबा। तो ऑब्वियसली आपण देखि परथो के डिस्कशन जदी हम बिगिनिंग रु देखिबा फ्रंट पेज रो इंडियन एक्सप्रेस आज होची 13 अक्टोबर 2023। तो आज हम न्यूज़ को देखिबा किछि फैक्चुअल न्यूज़ आ एडिटोरियल बोथ को मिसेकी देखुची। तो जदि हमें फास्ट हमें देखिबा ऑब्वियसली गाजा रे जो प्रकार ऑब्वियसली हम के गाजा स्ट्रिप दैट मींस द वार बिटवीन द गाजा एंड इजराइल जो चली से बहुत घमाघट आम कह दैट इज व्हाट वन ऑफ द डेडलीस्ट वार इन दिस डेकेड जदि हम देखा डेकेड्स देन तो या तो आम डिस्कस करबा आगु को मते बहुत सारे आर्टिकल्स आसीबो जहाँ भी हो। तो इजराइल कहवा कथा कि जो गाजा रे जो हमास अच्छी जो हमास कथा मु डिस्कस करथली जो हमास टेररिस्ट ग्रुप जो मैंने कि इजराइल ऊपर अटैक करथिले ठीक अच्छे। तो इजराइल कहवा कथा कि एमिति तांको पूरा मूल अपोज करदेवे जमती कि आईएसआईएस। तो आईएसआईएस जमती कि हमर आईएसआईएस जो मिलिटेंट ग्रुप थिले तांको पर जमती यूएसए जमती प्रहार करिथिला जमती हमें लाडेन कथा नहीं जो इवन इंडिया कथा मध्य नहीं जाओ। तो सही भलिया चाहूचंदी कि हमास को मध्य पूरा निपात करदे बोली बेंजामिन नेतान्याहू कहवा कथा कि गोटे वार दैट मीन्स तांको पई गोटे कोन हिची। तो लॉ मेकर्स माने गोटे कोन करछंती वार कैबिनेट बनैछंती। तो से वार कैबिनेट तांकर टार्गेट है इजराइल रो ना इजराइल जदि हम देखबा राइट नाउ दे आर फाइटिंग टू फ्रंट ऑफ वार। एक तो लेबनान सीरिया साइड रे मध्य वार करूचंती कहले नॉर्दर्न साइड एंड साउदर्न साइड। सो इजराइल इज नाउ फाइटिंग फ्रॉम द बोथ एंड फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड as well as from the southern side war chalchi and Hamas that war is what led by the Hamas and Israel ro amikeba air force and the armies as well। तो ये बहुत खतरनाक वार चलची आम कहीपर जो थाउजेंड्स ऑफ बीइंग किल्ड ईच डे आम देखिपर जमती कि देखिपर है ना सम ऑफ द इमेजेस जहाँ भी हो। इन्फ्लेशन कथा जदि आम देखा कि इन्फ्लेशन स्मूथेस टू 5% फैक्ट्री आउटपुट्स आर द व्हाट 14th month हाई जहाँ भी हो। तो इन्फ्लेशन कौन सिंपल इन्फ्लेशन होची दैट मीन्स द ग्रेजुअल राइज ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस आम कह आर्टिकल्स तार सेटा होची इन्फ्लेशन ना। इन्फ्लेशन जिते भी आसे इन्फ्लेशन दैट मीन्स द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ इंडिया जे कि हमर इन्फ्लेशन को टारगेट को सेट करि थाए। तो दैट मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी जो अच्छी हमर जो कमिटी अच्छी तांको अनुसार इन्फ्लेशन इंडिया रे केते रहबा कथा दैट इज व्हाट आम कहबा 4+-2 रहबा कथा इन्फ्लेशन दैट मीन्स 4 इज द न्यूट्रल हाईएस्ट व वर्स्ट केस रे हमें 5-6 को जाई परिपा एंड इट वुड बी लोएस्ट 2%। सो दैट मीन्स 4+-2 थिला हमर मॉनेटरी पॉलिसी रो ऑब्जेक्टिव के इन्फ्लेशन को हमें सेतिक रखी परिबो। फिर भी जदि हमें देखिबा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थाए ऑब्वियसली हमें जेतेलो इन्फ्लेशन को मेजर करि थाउ दीटा इंडेक्स रे हमें मेजर करथो गोटे थाए हमर डब्ल्यूपीआई आ गोटे थाए सीपीआई आ गोटे थाए हमर सीपीआई। तो जो आम डब्ल्यूपीआई सीपीआई को देखुचे दैट मीन्स द सीपीआई जदि आम देखा हियर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट मीन्स जो मार्केट रे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट मीन्स 5.2 अच्छी दैट टू बी 5.2 दैट मीन्स कंज्यूमर प्राइस बढ़िबार कारण कमिबार कारण बा इज हबा स्मूथनेस हबार कारण होची कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी ऑब्वियसली आम जानिचे कि जिते प्रोडक्शन बढ़ी जिवो तो दैट मीन्स प्राइस ऑटोमेटिकली द प्राइस विल रिड्यूस। सो द रिटेल इन्फ्लेशन इज नाउ स्मूथेस्ट ओके ये टिके कमी आउ गोटे कारण कौन दिखाई ना दैट मीन्स आम कह फ्यूएल प्राइस जदि आम देखा कमी कौटी ना कौटी जो 300 टंका सिलिंडर पिछा जो कमे तो आम कह लोअर एलपीजी वेजिटेबल प्राइस कमी तेणु करके एलपीजी और जो वेजिटेबल ये दीटा कमिबारु आमर जो कौन है दैट मीन्स द सीपीआई कमी। तो जदि तुमको क्वेश्चन पचारे कि सीपीआई प्रेजेंटली कहीं कमी ना आमर जो वेजिटेबल प्राइस कमी और ये सब कमिबा द्वारा ओके। कोर इन्फ्लेशन जदि आम देखा कोर इन्फ्लेशन क्या कहुए देख आरबीआई रो टार्गेट के 4% इन्फ्लेशन टार्गेट के 4% जोटा मुझे तुमको कहली 4+-2 टार्गेट ओके ना। कोर इन्फ्लेशन कौन ये लिखाई कोर इन्फ्लेशन दैट एक्सक्लूड्स द फूड एंड फ्यूएल डिप्स टू 4.7 दैट मीन्स कोर इन्फ्लेशन के आसी पहुंची 4.7 रे पहुंची। सो बोथ कोर इन्फ्लेशन एंड द सीपीआई दे हैव रिड्यूस। तो जदि आम तुम कह सर सीपीआई जदि आम कह दैट मीन्स सीपीआई सिंपल तुम जदि देख गोटे काम कर आम फूड एंड फ्यूएल्स को जदि आम माइनस करदे then we will move to the core inflation okay। तो core inflation
एम सीपीआई टा कौन थाए ना साधारणतः भोलाटाइल थाए साधारणतः एथिपाई एम कोर इन्फ्लेशन अर्थात कि जो आम फूड एंड फुएल को जब एक्सक्लूड करवा फूड एंड फुएल्स दे आर द भोलाटाइल इन नेचर से ताकू एक्सक्लूड कले आम कोर रे जाइए पहुंची जा ये हूँ बुझीपार एवं बुझा पड़ कोर इन्फ्लेशन तो इज्राएल रु इंडियंस मान को ऑब्वियसली आना जाऊँगी कहीं वार सिचुएशन चलती सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ट्यूजड दैट वी हैव इवैक्यूएटेड 230 इंडियंस रिटर्न फ्रॉम द इज्राएल रु आसी जाइछन्ती खास कर इंडियन स्टूडेंट्स माने बहुत रहंती सेठी ओके देन आम धीरे धीरे आगू को जा आग न्यूज देखा पूजा आसूची तो बहुत सारा दैट मीन्स आम कह रसेस देखा खास करी आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज रे बहुत सारा रस तुमको देखा ना वी हैव टू मूव अहेड सो ना ओडिशा गवर्नमेंट गोटे नुआ स्कीम धरिकी आसुंती जो स्कीम रो ना होची तुम देखि परिबो दैट इज द व्हाट आमे जहा को कहबा के मल्टी लोकेशनल एक्सेसिबिलिटी व्हाट दैट इज व्हाट आमे कहबा दैट इज लॉन्च दैट इज द लोकेशन सॉरी जहा को आमे कहबा लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मोडल इनिशिएटिव करेक्ट मी सो द स्कीम नेम इज लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मोडल इनिशिएटिव The scheme from the Malkangiri launch kara jaichi that will connect the panchayat with the blocks that is the headquarter and to the districts. So under this schemes that means it would be a transportation scheme. So this schemes talk about what? That means ye kochi kono na ye hoche location accessible multi-modal initiative scheme. Malkangiri ru start hichi first the villagers would be connect with the block and the blocks with the district headquarter. So more than thousands of bus will be run कराजिबो different states जेमते रायगड़ा गजपति कलाहांडी मालकानगिरी ऑलरेडी स्टार्ट हे सारी छी सो दैट मीन्स हम केबा गवर्नमेंट कोन करूचंती ये सर्विस को कोन करिवे फ्री करे लोकन को पई करूचंती ओके दैट मीन्स लॉन्च द लोकेशन एक्सेसिबल मल्टीमोडल इनिशिएटिव ओके तो एटा करूचंती एड्रेसिंग ए मैसिव गैदरिंग दैट मीन स्टेडियम रे साधारणतः मालकानगिरी करथांती तो ये बिजू कौन कर दैट इज द बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना कहते तार बेनिफिट बहुत मिले बोली कहते तो सिंपल दैट मीन्स आम कह ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ओडिशा गवर्नमेंट गोटे नुआ स्कीम करछंती हियर यू कैन सी द प्राइम मिनिस्टर्स ओके दैट मीन्स द लोकेशन एक्सेसिबिलिटी मल्टी मोडल इनिशिएटिव स्कीम्स आम देखि पारे जो कनेक्टिविटी को बढ़ा ओबियसली यार गोटे बेनिफिट कौन रही तुम कह सार को आम कौ लिंक कर पेपर ओबियसली यू कैन लिंक्स टू द पेपर ओडिशा ओडिशा सेक्शन रे ऐड कर गवर्नेंस अदरवाइज जब चाहिए अदरवाइज पेपर 3 रो एनवायरमेंटल सेक्शन रे करि परिबो कारण एथरे एनवायरमेंटल सेक्शन रे जदि हम एग्जाम रे ऐड करिबा सो लाइक आम कहबा के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़िबा द्वारा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़िबो प्लस आम कौन करवा दैट मीन्स एम्प्लॉयबिलिटी तो बढ़िबो जो कार्बन फुटप्रिंटा कोठी ना कोठी कमी जिवो काना लोक माने आगे कौन करथले बहुत सारा लोक अछंती से माने काम को जाई परु नाहंती जेहेतु ए सब बैकवर्ड्स रीजन हम कहबा तो तार भी गोटे बेनिफिट मिल लोक मानक आउ गोटे जदि आम बेनिफिट देख लोक मानक कौन रहिबो जो वुमेन्स एंड द गर्ल्स दोज हु आर हेजिटेटेड टू व्हाट टू गो टू द वर्क प्लेसेस they will have no accessibility and the affordability will be there. Apart from that, what would be the benefit is that the benefit will be that will also reduce the CO2 carbon, that means carbon dioxide the production that will also reduce here. So carbon dioxide मध्ये production आम कौन कहबा ये मध्ये एटी कमी जिवो तो ये benefit हम पई रहिबो that would be the benefit here. अच्छा ये जो डिस्कस मु करते हैं इकोनॉमिक पार्ट्स रहबो ओबियसली पेपर 3 तो इकोनॉमिक्स पार्ट रहबो छोटा सीपीआई एंड द कोर इन्फ्लेशन प्लस तुम प्रिलिम रे मध्ये डिस्कस मध्ये आको करि परिबो बाकी जदि हम देखिबा सुप्रीम कोर्ट एबे गोटे वर्डिक्ट दैछंती आवर्षण ऊपर कि एठी गोटे केस थिला कि 26 वीक रो जो फॉइटस ता थिला दैट इज द फॉइटस वर्सेस द मदर चॉइस तो सुप्रीम कोर्ट कहछंती कि we will strike a balance between the choice and right. Okay, we will strike a balance between the choice and right. तो वर्तमान that means मतलब जनकर choice और जनकर right ठीक अछि तो that means says can't kill the fetus or the child कहले ये सुप्रीम कोर्ट कहया था कि आको आवर्षण में करबा नहीं कि 24 वीक रु अधिक हे गेले हमें आवर्षण करबा नहीं बाकी केस टा फाइनल हेनी आगो को आसिला हम डिस्कस करबा now we will comes to the editorial part तो एडिटोरियल पार्ट रो जदि हमें देखिबा है ना तो फास्ट इंडिया कनाडा रिलेशन तुम देखिबा द ऑथर इज हियर शशि थरूर ओबियसली तुम जानते थर्ड टर्म लोकसभा फ्रॉम द 3 अनंतपुरम्स
and the Sahitya Academy winning author of 24 books, mostly recently, that is Ambedkar. Most recently, the Ambedkar. That means ye, that is a Sahitya Academy winning prize author madhyanku milichi. So this person is known for his what ability, that is particularly the prowess of the language skill of this person. जब भी हो, so ये लोग को Basasi Thara, the honorable member of the parliament, he has written the articles on the recent that is what development on the relation between the India and Canada. तो ये कहवा कथा ता पूर्व रे गोटे बढ़िया कोटेशन देखि दियो. War is what happens when the language fails. That means सेतेबेले ही war जितरे language fails हुए, अर्थात talk जितरे talk fail ही जे सेतेबेले war हुए. So we most emphasize on the talk. Samadhan. So discussion, that means discussion must be solution. Discussion must be disengagement. So discussion must lead toward disengagement. ये तुम मध्य कहि परिबो. ऐसे writing रे भले quotation लिखि परिबो. Now what we will see here is that is the Canada Jati's author कहती कि Canadian Prime Minister Justin Trudeau, who has Canadian that means the House रे जाई कि कहले House of Commons रे बा Canadian Parliament रे कहले से कि जो Nizar, that is the word Hardeep Singh Nizar, who used to be, that means on the eye of the Indian government, he used to be a die-hard criminals and got the shelter in Canada. That person was killed in a gang war there in Canada. And but what happens that this Trudeau, the Justin Trudeau of the Canadian Prime Minister, he has alleged that the government of India, the government agents from the India, they were rightly or having the link or those who were able to kill the Hardeep Singh Nijars. So government, that means India is responsible for the killing of extraterritorial jurisdiction. Extraterritorial jurisdiction, and India is responsible for the killing of these persons. But the government of India sponsored with having the credible allegations. So that means Puni se kole ki mo pakhare evidences usi. So Canadian Prime Minister Justin Trudeau, who said to the Parliament of the Canada that he has having credible, that is the evidences that India has killed that person as the India's agent or the sponsored by the India. Aku कहछि. तो आकु नहीं कि कोनो हैला Canadian officials माने discover कले. एबे देखो Justin Trudeau official statement जेतरो triggered by his what discovery, and the Canadian officials were what leaking the story of the Globe and the Mail. एबे हमें कौन करिबा ये जेतरो एक कथा कहले that what I would say that will haunt India, that means you are trying to haunt India, blame India, so and to what I would say to support the pro-Khalistan movement. The government of India said that this is what I would say, this is ये पूरा संपूर्ण absurd कि government of India तार reply रे कले the allegation which was put forwarded by this person, the PM of the Canada, is absurd, baseless, and does not have any evidence backing that. Or if they are having evidences, please put forward that. The new lady on its statement, on her statement, said that jo katha kohchanti Justin Trudeau, that is baseless, that does not have any backing, that does not have any credible evidences. ये केवल निजर पॉलिटिकल गेन पई कहउचंती कि द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो. तो दैट मीन्स जदि हमें देखिबा आकु नहीं कि वार चलला एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स हमें देखिबा ये लोक एते काहे कि इंपोर्टेंट. दैट मीन्स जने लोक मरि गला ताकु नहीं कि दीटा देश भीतर पॉलिटिकल वार हे गला, relation खराब होको लागिला. Who's that person? That person was one of the member of what, that is the what pro Khalistan, that Jagmeet Singh, that Jagmeet Singh हमें कहिबा जोटा कि न्यू डेमोक्रेटिक party, sorry, the new democratic party led by the pro Khalistan Jagmeet Singh, and this person, that is the Nizar, that is but Hardeep Singh Nizar was used to be the member of the pro Khalistani, that is but Jagmeet Singh. Or that is the what हमें जागो कहिबा that is what, or that is the minority new that is democratic party. Okay, आंको बिना कैनेडियन आमे जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ये निजर अस्तित्व तांकर नाही, टळमळ हेलानी तांको पोस्ट. तेणु से चाहूँ छोट मोट पार्टी जमती अच्छी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी,
लेड बाय द 6 आम कह खालिस्तान प्रो खालिस्तान जदि एम सपोर्ट पाइब से आउ थे प्राइम मिनिस्टर हो पार तो कौटी ना कौटी आम कह गोटे पॉलिटिकल बा पर्सनल गेन मुझे आज पर्यंत बहुत थर मुझे कि पर्सनल गेन इज द कज ऑफ द प्रेजेंट डे कंसर्न प्रेजेंट डे रे जेते भी जमती ट्रूडो कथा जदि से भाभी थांते कि यार मु प्राइम मिनिस्टर हबा न हबा दैट डज नॉट मैटर द मैटर इज दैट हाउ मच कैनेडा इज गोइंग टू बेनिफिटेड विद द इंडियाज अदर एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिलेशन वी हैव बीन मेंटेनिंग सिंस ए लॉन्ग टाइम in spite and on the top of that India and sorry US also one of the what is the best friend. So in this scenario jodi evhale situation gote create haba that is not for the political atmosphere as well. तो एभले केस रे एमती करियर नथला पॉलिटिकल गेन को बा माइलेज को आनिबार नथला तेणु इंडिया मध्य कोन कले जो वीजा सर्विसेज बोथ द कंट्रीज they have now cancelled the visa services to the respective nations the nationals. And the Canadian government also said that those Indians, that means Indians, I would say the government officials, कि जो Indian embassy अच्छी, से मान को हमारे कौन करा जो embassies अच्छे नंबर कमा जो services मध्य कमा जो तो इंडिया मध्य से आकर लेकिन ठीक है यदि आमो embassy रे संख्या कमाया पे को हाउची और let's say our people those who are engaged in the embassy they were putting some sort of the जासूसी हमें जहाँ को कहबा the surveillance. So Canada कहले तमरो जहाँ जति एम्प्लॉय अछि ताको नहीं जाओ इंडिया गवर्नमेंट मध्य कहले कि आमरो जति कि तमरो जो कैनेडियन अथॉरिटी इंडिया रे जति अछि 41 ताको भी मध्य तमे कमाई दियो ओके बाय द डेडलाइन दे देले. सो दिस वर्ड इज द कहि परिबा ना आकू नहीं कि इंटेलिजेंस सर्विसेज माने इंटेलिजेंस यार यूएसए यूनाइटेड किंगडम न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ये माने सपोर्ट करे को लागिले कहा को कनाडा को ठीक अच्छी किए कैनेडा कहवा कथा ओके बट किंतु धीरे धीरे आमको जनागला कि दीज कंट्रीज दे आर अवॉइडिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द इंडिया एंड कैनेडा देन व्हाई okay so they are saying that they must come forward. The bizarre thing is that if Canada had the evidence relevant to the murder of the investigation that should have taken to the court तमे भाई एमाने कहले जस्टिन मतलब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मान को साहाଯ୍य तो मागुतले एमाने एबे कहया कथा कि नहीं दे शुड सॉल्व इट वी आर नॉट गोइंग टू वी वुड नॉट बी एंटैंगल देयर आमे सेठी किछि एंटैंगल हवा पे जाओ ने ओके डन ना ऑथर कहया कथा शशि थरर कहया कथा कि बिजार थिंग इज दैट जदि तमर किछि थिला त कोर्ट को जाइथन द कन्विक्ट हेतन द चार्जेस द किलर वुड हैव द चार्ज्ड ना जदि तमे कोर्ट रे प्रूफ करि पारु न so that what convinced that is the India's simplicity. So that means the complicity को जो आमे इंडिया को complexity करूचे इंडिया रे simplicity जना पड़ुचे कि simple India is not behind the issue. इंडिया इशू रे कौन से भी इंडिया रे हाथ नहीं सिंपल आमे इंडिया को ड्रैग करे पे चाहूचे बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल माइलेज इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ओके तो एथि पई इंडिया को चाहूचंती तो ओब्वियसली आम ताको कहि परिबा अदरवाइज लेट्स से जदि तुमको इंडिया ऊपर कौन से प्रकार डाउट रहिला तो तमे सेटा क्लोज डोर रे आम इश्यूटा को समाधान करि परथांते रादर देन कि पब्लिकली आसी कि हाना कहिबा परिवर्ते वी कुड हैव सॉल्व इट्स आम डेवलपमेंट लेवल रो करि परथांते क्लोज डोर रे करि परथांते सो द रिलेशन हार्म ही न थांता. तो ये जो कालोसनेस थिला आम देखिबा द कालोसनेस एंड द पॉलिटिकल माइलेज जोटा से कले दैट इज नॉट फाइन. सो G20 रे मध्य आम कहबा दैट मीन्स मोदी दी जेतबे ट्रूडो को भेटी थिले एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज होउची एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट कनाडा रे जो माने मतलब सपोर्ट पाउचंती 6 डायस्पोरा सेमान को ऑब्जेक्ट करे पे कहितले आम देखिबा सिंस हम जान पारो 1985 रु जेतबे बहुत सारा आम कहबा गोटे जेतबे आम सेतेबे भी माने बहुत सारा एयर इंडिया जेट को उड़ाई देथिले तो सेतेबे भी जेतो आज जो कनाडा कहूची तो तमे दैट मीन्स आम कहबा जो माने आम आगर टेररिस्ट तमे ताको शेल्टर दउचो. So Air India jet 1985 रे जेतरा किल से 329 पीपल्स मोस्टली द कैनेडियन सिटीजन्स एंड द इंडियन डिसेंट्स तो सेते बेले तो इंडिया जेतबे कहले दैट मीन्स तो मैं सेते बेले इंडिया कहले कि दोज हु आर गिल्टी सेमान को दिया जाऊ बट कैनेडियन अथॉरिटी सेते बेले मना कहले कि नहीं सेमाने कि सेमान को सेते बेले भी शेल्टर देला एबे भी शेल्टर दउछ अर्थात कोन दैट मीन्स कैनेडा इज शेल्टरिंग द टेररिज्म और दे आर पैट्रोनाइजिंग द टेररिज्म एंड शेल्टरिंग पुटिंग द शेल्टर टू द टेररिस्ट. तो एमिति हवा द्वारा कौन हम दैट मीन्स द बट द साइंसिज्म अबाउट वेदर इट वुड हैव डेवलप्ड आम कहबा ये गोटे टॉक्सिक रिलेशन हे पारे ओके जो निजार डेथ कुड बी दैट मीन्स आम कहबा टॉक्सिक धीरे धीरे रिलेशन खत्म हे पारे ओके
obviously India denial could reflect the government innocence. आमे government direct innocent government करूचे, we are not okay, we are not there, तो आमे एथरे किछि नै, हमर एथरे किछि भी रोल नाही. तो दैट मीन्स आमे कहिबा तो कोउठी ना कोउठी जदि आमे देखिबा ए भळे जो सिचुएशन होउची बा कनाडा जो हार्बर करूची, तो कनाडा व्हिच इज हार्बरिंग दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आल्सो नॉट गुड फॉर कनाडा, नॉट फॉर इंडिया एज वेल, नॉट फॉर वर्ल्ड एज वेल. तो ये हमको देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गेन द बट डोमेस्टिकली बोथ फ्रॉम द आमे कहबा तो ओबियसली मोदी जी तमे जानचो दैट मीन सपोर्ट पाइछंती कोठी डोमेस्टिक सपोर्ट पाइछंती एंड बोथ फ्रॉम द अदर पार्टीज हम देखिबा जेमते कि हमर साउदी फाउदी माने जो अछंती इवन विथ इंडिया को सपोर्ट करछंती, अदर पीपल तो आर आल्सो बैकिंग द गवर्नमेंट. तो ओके, तो दैट मीन्स हमें nonetheless is that the Indo-Canadian relationship is an important relationship. So we are having like 8 billion trade deal जैसे हमें देखो trade होती bilateral trade. तो जेहेतु we are the one of the two or the largest economy, that means हमें कई बार जोड़े कि cooperate करिवा, cooperation करिवा बहुत better. Okay, so that was all about Canada relation. हमें देखिबा नेक्स्ट रिलेशन जदि आम देखा नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स आम रहा कि इलेक्ट्राल बॉन्ड उपर. तो आजिकल इलेक्शन देख इलेक्शन आगू अच्छी, तो इलेक्ट्राल बॉन्ड उपर समस्त डिबेट होची कौन द फंडिंग ऑफ द इलेक्शन. तो फंडिंग ऑफ द इलेक्शन दैट मीन्स इलेक्शन ओबियसली तुम जानते थ्रू द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्शन फंडिंग होता है. तो दैट मीन्स आम कहवा द देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज द अरुण जेटली हु प्रपोज द व्हाट प्रपोज करथिले कौन ना दैट इज द आम कहवा जाको कह जाए बॉन्ड बा जाको आम कहूचे कौन ना आम जहाँ को कौन कहे दैट इज द जस्ट मिनिट. ओके, सो ना दैट मीन्स आम कहवा दैट मीन्स जो आम कहवा आजिकल फंडिंग बहुत अच्छी, तो कह जाए कि लोकसभा इलेक्शन आगो को अच्छी, तो इलेक्शन कमिशन मध्य चाहिए कि पार्टीज माने बहुत सारा पार्टी फंडिंग होती जाको इलेक्ट्रल बॉन्ड. तो इलेक्ट्रल बॉन्ड दैट मीन्स आम कहवा द ऑथर कहवा कथा द फंडिंग इज ट्रूली ट्रांसपेरेंट हवा दरकार है ना. आउ आमर कहवा दैट इज फ्री ऑफ द कैश फ्रॉम द फेयर इलेक्शन. तो आम कैश फ्री हवा दरकार, फेयर इलेक्शन हवा दरकार. एथिपई गवर्नमेंट बहुत सारा स्टेप नहीं चंती जेमती कि इलेक्ट्रल बॉन्ड कथा नहीं जाओ. तो इलेक्ट्रल बॉन्ड इज नॉट, इट्स ओपेक. तो ये कहता है दैट मीन्स ओपेक जो यूनियन गवर्नमेंट आम कहवा दैट मीन्स आम यूनियन गवर्नमेंट एंड इलेक्शन कमिशन has failed to prevent the parties from spending the multiple prescribed limit. इमरे बहुत खर्च करूचंती. जदि हमें देखा देयर आर अपार्ट फ्रॉम द दैट मीन्स हमें बुक दे फास्ट दैट मीन्स हमें ना देखो द अराइवल ऑफ द इलेक्शन सीजन जदि हमें देखिबा तो साधारणतः फंडिंग बढ़ी बढ़ी जाउची ना. से माने आज पर्यंत इलेक्शन कमिशन ऑफ पार्टीज ना कैश फ्लो को चेक करि परछंती, ना ट्रांसपेरेंसी आनी परछंती, ना गवर्नमेंट ना इलेक्शन कमिशन. दे वर नॉट एबल टू ब्रिंग द कैश और चेक of the cash flow to the parties, neither they were able to find out the transparency in the system. तेणु करके जदि आम फास्ट टर्म ऑफ मोदी जी गवर्नमेंट टाइम रे जेतरो अरुण जेटली जी इंट्रोड्यूस करथिले इलेक्ट्रल बॉन्ड ऑफ इंडिया. ओके, इलेक्ट्रल बॉन्ड एथिपे आसीतला कोन पे टू चेक द कैश फ्लो है ना एंड ट्रांसपेरेंसी आसीओ बोली इलेक्ट्रल बॉन्ड हितला. थ्रू द इलेक्ट्रल बॉन्ड यू कैन कंट्रीब्यूट और द कंट्रीब्यूट अर्थात डोनेट द पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज or any political parties who has got 1% of the share in the Lok Sabha election or state assembly election से माने शेयर पाई परिवे बोली आसितला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रे है ना. बट से बॉन्ड रे जो माने डोनेट करिवो से मन के ना को रिफिल करा जिवो नाही. बट ये जो बॉन्ड रो जो ऑब्जेक्टिव थिला के बॉन्ड रो जो आमे कहबा जो कैश फ्लो पॉलिटिकल पार्टी के कमीबो, ट्रांसपेरेंसी दीटा कोटा भी अचीव हेई पारि नहीं. बॉन्ड रो लिमिट करा गला 20,000 टू 2,000 के 2,000 टू अधिक दैट मीन्स हम कहबा 20,000 टू 2,000 डिनोमिनेशन करा गला. ताठू अधिक के कोनोसी लोक कैश देबे नाही. आगे 20,000 थला एबे 2,000 अधिक कैश नबो नाही पॉलिटिकल पार्टीज माने. ओके, ठीक अच्छे. तेणु किंतु पॉलिटिकल पार्टीज माने कोन कोनते मल्टीपल नौचंती कोन होचंती पॉलिटिकल पार्टीज adjusted the new reality and started the what recording all their cases received multiple donation. ओके, ताको मल्टीपल डोनेशन रे कर दउचंती. दैट मीन्स हम कहबा जेते जहा कले भी कैश फ्लो टू द पॉलिटिकल पार्टी कमो नाही. से माने कोठी ना कोठी गोटे बाट खोजी के बाहर करूचंती. ओके, तो ये मैटर हमें देखिबा ये बहुत ही इंपोर्टेंट मैटर हमको देखिया को मिलची. अनदर कंसर्न जदि हमें देखिबा दैट इज द गवर्नमेंट.
हाँ देख आउ गोटे कनसर्न होची जो इलेक्ट्रल बॉन्ड। अच्छा प्रथमे इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन मु कहली इलेक्ट्रल बॉन्ड होची गोटे उपाय जहाँ द्वारा इंडियंस माने आमर इलेक्शन को फंडिंग करें जहाँ को डोनेट फंडिंग अर्थात डोनेट बाहर लोक दे पारे ना इलेक्ट्रल बॉन्ड बाहर लोक दे पारे ना ओनली इंडियंस ओके से भी पुणी वर्षर केतेटा फिक्स टाइम रहो से टाइम से डोनेट करेंगे से ना को रिविल्स करा जाए से कैश केते दे पारे 2000 ताठू अधिक दे पारे ना जड़े लोक ओके तो ये जहाँ भी हो पुणी आम किसी ब्रांच जो आलोटेड रही से तुमको डोनेट करा पड़ो डन तो ये आमको देखागला एवं जदि आम देखा तो जो मैंने कैश दौरान डोनेट कर पॉलिटिकल पार्टीज को से ना तो जना पड़े ओपेक रहा बट जेहेतु गवर्नमेंट पावर जो गवर्नमेंट पावर रे सी जापर दैट मीन जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी पावर रे गवर्नमेंट ओके से माने जानी परिबे किए दउचंती किए न देचंती सो दैट हमर कोन हबो जो माने भी डोनेट करबे से माने अदर पार्टी को देबे नहीं सो रूलिंग पार्टी को अधिक कैश मिलिबो रादर दैन जो अपोजिशन बिकॉज रूलिंग पार्टी जानी परिबो किए दउची न दउची सेथे पई जो कैश आसुची ये सबले रूलिंग पार्टी को अधिक मिलिबो रादर दैन द अपोजिशन पार्टी सो दैट रूलिंग पार्टी रो कैपेबिलिटीज खर्च करबा कोठी ना कोठी बढ़ी बढ़ी जीवो पुणी अनादर जदि कनसर्न एरिया जो चेंज आसी जो आमर कंपनी सब रही से माने डोनेट करें केते ना 7.5% ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 इयर्स हैला जोड़ा थिला ताको भी अनलिमिटेड कर दै छथि ओके दैट मीन्स नाउ ओपन्स टू द डोर फॉर द अनलिमिटेड कंपनीज तो कंपनीज माने अनलिमिटेड डोनेशन करि परिबो ताले ये तो ओपेक ना को कंपनी करूची हमको जणा नाही ओके दैट मीन्स हमको हैज बीन दैट मीन्स आको हमें कोन करबा जस्ट अ मिनट सो दैट हमें कंपनीज माने हमें देखबा जदी फंडिंग करबा स्टार्ट कला सो दैट हमें कहबा दैट मीन्स द ओपेक रहउची अनलिमिटेड ओपेक दे आर चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट्स द पिटिशनर्स आर्ग्यूड्स करछंती कि जो माने गवर्नमेंट रो अछंती से माने अधिक नउछंती तेणु हमर गोटे सजेशन अछि कि रिप्रेजेंटेशन फॉर पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट द इलेक्शन कमिशन कहया कथा इधर हमें पॉलिटिकल पार्टी माने जेतिक डोनेशन पाउछंती तार 20% खर्च करिवे कैश दैट मीन्स 20% रो अधिक कैश से रिसीव करें ना जी टंका टोटल रिसीव होची तार 20% रो अधिक कैश रिसीव हो पार ना फर्स्ट कथा सेकेंड कथा 20 करोड़ रो अधिक से माने कौन करेंगे टोटल पार्टी रो जो डोनेशन सेटा दैट मीन्स आम कहवा ये लिखा इलेक्शन कमिशन seeking the amendment for the representation of the people act for the cash cap that is the cap of the cash 20% of the party's total donation or 20 crores जोटा होबो that means whichever is lower either 20 crores or 20% रे ताको खत्म करबा तो ये हमें आर्टिकल्स देखले दीटा आर्टिकल्स एबे 3 नंबर आर्टिकल्स को जिबा देखो 3 नंबर आर्टिकल्स रे हम देखिबा कि फर्स्ट आर्टिकल जोटा कि हमरो एशियन ऊपर अछि तो एशियंस ऑब्वियसली एशियन कंट्रीज जानिचो के सिंगापुर मलेशिया इंडोनेशिया म्यांमार थाईलैंड लाओस कैम्बोडिया वियतनाम फिलीपींस so Indonesia so these are Malaysia as well so they are coming these 10 countries अच्छी that means हमें कहबो जो एशियन अच्छी एशियन होले कहले जो साउथ ईस्ट हमें कहबो द साउथ ईस्ट जो रीजनल ये गोटे रीजनल कोऑपरेशन एशियन एबे भी तांकर गोटे मीटिंग हेतला दैट इज द बट आई मीन दैट मीन्स कहबा द एशियन दैट मीन्स द साउथ ईस्ट एशियन नेशन मानकर गोटे फोर्थ व्हाट 43rd मीटिंग लास्ट मंथ रहितला जो थरे से माने गोटे अकॉर्ड्स नै के आसिछंती जाको कुआ जे दैट इज व्हाट जाको कुआ जे एशियन that is what that is the that means जाको कुआ द रिसेंट जाकार्ता डिक्लेरेशन जाको कुआ जे जाकार्ता डिक्लेरेशन और कॉल्ड एज द एशियन what concord एशियन कॉनकॉर्ड जाको हम कहबा जाकार्ता डिक्लेरेशन सो जाकार्ता डिक्लेरेशन रे कुआ जाए कि एशियन कंट्रीज माने तांको भितरे इकोनॉमिक कोऑपरेशन करिवो ओके दैट मीन्स फास्ट आम कहबा इकोनॉमिक कोऑपरेशन करिवो जे भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन करिया पिन चाहिबो से कोन करिवो दैट मीन्स ताको ना से एग्रीमेंट ही और सी हैज टू बी दैट मीन्स आको कहा जाय द ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन साउथ एशियन आको साइन करिया पड़िवो तो ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन को साइन कले तमे आरो मेंबर हे जिवो सेकेंड रहला ए माने ह्यूमैनिटेरियन कथा कहंती दैट इज व्हाट ह्यूमन राइट्स कथा कहंती ए माने ह्यूमन राइट्स कथा ए माने मध्य डिस्कस करचंती कि ह्यूमन राइट्स रो वायलेशन बात एमती ए तो दैट मीन्स हम देखबे एशियन कंट्री भीतर मध्य ह्यूमन राइट्स रो वायलेशन होचे म्यांमार रे पर म्यांमार केस को नै कि एशियन डिवाइड हे जाय दि भाग रे देन थर्ड इश्यूज को ए माने डिस्कस करथले जस्ट अ मिनट तो थर्ड इश्यूज थिला अंकर कोन
थर्ड इश्यूज थला दैट मीन्स द चैलेंजेस जाकर्ता डिक्लेरेशन आमे कहै जो चैलेंजेस आसुची ओके दैट इज द वर्ड रीएम्फासिस दैट मीन्स द चैलेंजेस देखो माने ये सब जो डिक्लेयर करूची जहां भी करूची ऑथर कहिबा कथा कि किंतु आसियान जदि एग्जिस्ट करिवो जदि एशियन चाहूची निजको रिवाइव करिवो निजको असर्ट करिवो निजको जदि से चाहूची असर्ट करिवो ताहला ना तांको चाइना सहित डील करिया पड़ो का सहित डील करिया पड़ो चाइना सहित डील करिया पड़ो कारण अनक्लोज लॉ को चाइना सरासर मना कर देछि एटा समस्त जांचो 9 डैशलाइन कथा समस्त जांचो साइड चाइना सी रे जो 9 डैशलाइन अछि जाको चाइना निजे कोन करे 9 डैशलाइन जदि मु एठी तुमको ड्रॉ करके देखैबी तो 9 डैशलाइन पासेस लाइक दिस होल रीजन 9 डैशलाइन আছে एबे तो 10 डैशलाइन मथे से कहूची 10 डैशलाइन तो चाइना सहित डील करिया अछि कारण एशियन मान को असर्ट करिया अछि तनको एठी कहउचंती इफ एशियन हैज टू रिमेन रिलेवेंट इट डज टू व्हाट डज नीड्स द रीइन्वेंट इटसेल्फ टू सुइट द चैलेंजिंग्स ऑफ द रीजनल एनवायरनमेंट तो निजको रीइन्वेंट करिया पड़ो ताको चैलेंजिंग सिचुएशन चाइना इज ए चैलेंजिंग सिचुएशन तो आकु दैट मींस हमको कोठी ना कोठी आकु चैलेंज को फेस करे पड़ो अदरवाइज जो एशियन ऑर्गेनाइजेशन रो जो वेटेज ना से कोठी ना कोठी कम जबो so that would not be a good sign तो ये कथा कहया कथा दैट मींस हमें देखो अनक्लोज लॉ तो वगैरह साउथ चाइना सी ऊपर जेबी भी आसीबो बाकी मु तुमको डिस्कस कर देबी बाकी आउ किसी आज रो खास न्यूज़ नहीं सो आज रो एतिकी रहबो आज रो न्यूज़ ओके तो विद दिस आई विल एंड द मॉर्निंग सेशन थैंक यू एवरीवन